Now in the ninth part of it, it says solution would be containing 25 gram of sugar, 50 gram of salt, 75 gram of urea and 350 gram of water. They are saying mass percentage निकालो सारे component के. So first of all mass of sugar is there which is 25 gram. अब हमारे पास दूसरा क्या है? Mass of salt is there which is 50 gram. Then we have is mass of urea. Urea is nothing but 75 gram. उसके बाद लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर इज देयर. मास ऑफ वाटर इज नथिंग बट 350 ग्राम. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, देन रेस्ट ऑफ ऑल का मास परसेंटेज निकाल लेंगे हम सारे कंपोनेंट्स का. तो मास ऑफ सॉल्यूशन वुड बी नथिंग बट एडिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस, क्योंकि एक मिक्सचर बन रहा है तो सबको ऐड करोगे यू वुड गेट 500 ग्राम इन टोटल. अब हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ sugar. So that's nothing but 25 divided by the total amount which is 500 and multiplied by 100. 0 से 0 गया. 25 को 5 से divide करोगे you would get 5%. Then we have is mass percent of salt which is 50 divided by 500 into 100 is there. 2 zeros से हमारा 2 zeros cancelled. 50 over 5 would be nothing but 10%. Now we need to find the mass percentage of urea which is nothing but 75 divided by 500 into 100. 2 zeros से 2 zero गए. 75 और 5 को divide करोगे तो you would have 15%. Then we have mass percent of water in this case. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 350 divided by 500 into 100. Zeros can be cancelled. 35 को 5 से करोगे तो you would get 70%. So now you can calculate कि total percentage आपका कितना फॉर्म हो रहा है. It's 100% in all.